हमारा परम सौभाग्य है, महाराज जी को हम 2 दिन से हम लोग का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम धन्यवाद देंगे महाराज जी को और महाराज जी को स्वागत भी करेंगे। जब महाराज जी पधारेंगे तो आप लोग बड़े दिल थाम के बैठे रहिए और कथा का पूरा आनंद लीजिए। महाराज जी इंग्लिश में कथा करेंगे मगर आपके लिए ट्रांसलेशन हिंदी में भी होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो हम सुने जब महाराज जी पधार रहे हैं। जो भक्त यहाँ चप्पल निकाले कृपया आप चप्पल बाहर निकाल दें। और मैं आप सबको निवेदन भी करता हूँ, चप्पल को स्टैंड में ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंदर नहीं लाना चाहिए चप्पलों को। अगर आपका चप्पल देते हैं तो प्लीज़ आप अपना चप्पल को बाहर रख दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ऐसे कहा गया है शास्त्रों में, अगर कोई शुद्ध भक्तों का सानिध्य एक क्षण के लिए करता है, कितना तो क्या होता है पता है, उसकी करोड़ों जीवन का पाप क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कहा शास्त्र में कहा गया है। मैं करोड़ों का बात किया, मैंने लाख नहीं बोला, सैकड़ों नहीं बोला, हजार, कितना बोला। तो ये तो अनुभव जब भक्तों के संग आएंगे तब पता चलेगा, सिर्फ सुन के नहीं पता चलेगा। तो जो भक्त होते हैं ना इतने शुद्ध होते हैं और भगवान कितने प्रिय होते हैं, जो उनके सानिध्य में आते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, वो भी भगवान का प्रिय हो जाते हैं। भक्तों का स्वभाव है। ऐसे कहा गया है भजन में, गंगा जी में आप डुबकी लगाएंगे तो आप पवित्रता हो जाएगी, है ना, पाप धुल जाएगा, राइट। गंगा में जब आप डुबकी लगाएंगे पाप धुल जाएगा, मगर साधुओं को तो आप दूर से देख लोगे तो आपका पाप धुल जाएगा। गंगा का परस होंगे पाश्चात्य पावन, गंगा का तो स्पर्श करना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। बात ना करिए, आप लोग के लिए बात करने के लिए आधा घंटा हम देंगे लास्ट क्लास के बाद, हम बोलेंगे अभी आप बात कर सकते हैं, अब बात नहीं करेंगे। प्लीज ना बात करें, अगर मेरा बात समझ में आ रहा है हिंदी में तो आप बात ना करें प्लीज। कम से कम हम मंदिर में आते हैं तो एटलीस्ट हम कृष्ण चेतना में हो। अब बात करना चाहे तो कृष्ण के बारे में तब करना चाहिए अगर कुछ नहीं चल रहा हो, कथा कीर्तन, अगर कथा कीर्तन चल रहा है उसमें। तो हम ये कह रहे थे कि कहा गया है कि गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद शुद्ध होते हैं, मगर दर्शन पवित्र को नहीं करना, बस वैष्णव का दर्शन करेंगे पवित्रता आ जाती है ना। इस शास्त्र में कहा गया है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं शास्त्र में जो सिर्फ भक्तों का सानिध्य में आके अशुद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे एक महान भक्त हमारे बीच में है और श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही जैसे भगवान के प्रिय भक्त थे, आप सबको पता है ही। और प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं सिर्फ प्रभु प्रभु बात ना करिए, हरि हरि हरे कृष्णा बात ना करिए। ओके, सुबह महाराज जी बोल रहे थे क्लास में, अगर क्लास के बीच में किसका फोन बजेगा तो उसके लिए एक दंड है कि हुंडी में 500 रुपया डालना पड़ेगा। एक बार मोबाइल बजेगा, वैसे हम नियम लगाएंगे, जो बात करेंगे एक बार बात करोगे तो 100 रुपये हुंडी भी फिर बात करने के काम लगा। मैं ऐसा नहीं है पर हम बात ना करें। तो हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे और क्या कह रहे थे उसके आगे गंगा में नहीं और कुछ कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था श्रील प्रभुपाद जो है वो कहा करते थे, जब मैं विदेश गया था मेरे पास कुछ नहीं था, प्रभुपाद के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, 40 रुपया था। और उस समय वो 40 रुपये का वैल्यू आई थिंक 2 या 3 या 4 डॉलर होगा, है ना, उस समय की बात है। तो 2-4 डॉलर में क्या कर लेगा व्यक्ति विदेश जाके। और उस समय प्रभुपाद के पास और कुछ नहीं था, मगर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कृपा से भगवान स्वयं ने क्या किए, कई सारे भक्तों को चुन चुन के मेरे पास भेज दिए इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ना मेरे गुरुदेव का आदेश था, प्रभुपाद जी गुरु जी का आदेश था कि आप पढ़े लिखे हो, इसलिए आप विदेश में प्रचार करो, क्योंकि ना वहाँ प्रचार करने के लिए पढ़ाई का व्यक्ति चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, राइट, और वैसे समझना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। तो उनके गुरु जी का आदेश था। तो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र पर गए ये प्रयास करने के लिए कि मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। और ऐसे ऐसे जो शिष्य हैं प्रभुपाद जी का, जब उनको मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, तब पता चलता है प्रभुपाद जी क्या थे। कल महाराज जी ने बतला रहे थे कथा में, कल कौन कौन थे कथा में, 1 2 3 4 5 6 ओके, तो कल थे ओके। तो महाराज बतला रहे थे कि प्रभुपाद जी ने जो किया
ना आज तक किसी ने ऐसा किया ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना प्रभुपाद को एक विशेष शक्ति था। कहाँ से? भगवान से, और उनके गुरुदेव का आदेश था। तो इसलिए कोई अपने गुरु के आदेशों को ठीक ठीक पालन करता है, प्रामाणिक गुरु को, और भगवान के प्रति शरणागत होता है, उसका हर एक कार्य सफल हो जाता है ना। ये प्रभुपाद की अपने जीवन से सीखते हैं। तो कल बहुत सुंदर सुंदर प्रभु महाराज जी बतला रहे थे। मैं थोड़ा स्मरण करता हूँ जब तक महाराज जी नहीं आते। तो महाराज आ रहे हैं, ठीक है। तो महाराज जी एक घटना कल बतला रहे थे कि महाराज जी जो है प्रभुपाद जी ग्रुप में प्रभुपाद जी बैठ के ट्रांसलेशन कर रहे थे गीता या भागवत का। तो एक फोटो था मंदिर में उनके गुरु जी का, प्रभुपाद जी गुरु जी का। प्रभुपाद जी गुरु कौन है? भक्त सिद्धांत सरस्वती। तो महाराज जी को कहे, और उनके जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस समय का, बोले कि वो बक्सर महाराज मेरे गुरु महाराज का फोटो मेरे यहाँ पर लगा, मेरे रूम में ला। तो बड़ा फोटो था। तो महाराज जी और जो टेम्पल प्रेसिडेंट था वो गए, जाके फोटो को बड़ा कष्ट से उठा के लाके, इतना बड़ा था, हेवी था, लेके आए। प्रभुपाद जी बैठे थे। तो ये आके वेट की, प्रभुपाद बोले कि लगा। तो ये थोड़ा कतरा रही थी। प्रभुपाद जी बैठे, हम कैसे उनके पीछे कोई फोटो को टंगाएंगे। आपको पता है वो किली होता है, किली में से टंगाना पड़ता है। मान लो लगाते लगाते अगर फिसल जाए तो कहाँ गिरेगा? प्रभुपाद जी के ऊपर गिरेगा। तो ये डर रहे थे। फिर भी प्रभुपाद जी बोले कि आप करो, प्लीज करिए। तो ये लोग डर डर के ट्राई कर रहे थे, किली लगा के उसको सेट कर रहे थे, मगर डर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी थोड़ा आप साइड हो सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी बोले क्यों? हम डर रहे हैं कि आपके ऊपर गिर जाएगा। प्रभुपाद जी बोले सेवा के लिए आप मेरे सर पे चढ़ सकते हो। प्रभुपाद जी बोले भगवान की सेवा, वैष्णव सेवा के लिए आप मेरे सर पे चढ़ के करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने विनम्र थे इसलिए प्रभुपाद जी, कितने हम्बल थे इसलिए। ये उनके शिष्यों से हम समझ पाते हैं। हमने प्रभुपाद जी को डायरेक्टली नहीं देखा, राइट? आप में से कोई प्रभुपाद जी को डायरेक्टली मिला होगा नहीं, राइट? मगर वो कैसे थे, कहाँ से पता चल रहा है? उनके शिष्यों के मुख से जब हम सुनते हैं तो पता चलता है वो कितने महान थे इसलिए प्रभुपाद जी, है ना। तो महाराज जी आ रहे हैं 5 मिनट, तब तक हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। आप कीर्तन सुनना चाहेंगे? उनको ऐसे लगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे महाराज जा रहे खड़े। हरे राम 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 हरे हरे हरे
प्रभुपाद की परम पूज्य बद्रीनारायण स्वामी महाराज जी की सब बैठ जाइए प्लीज, सब बैठ जाइए सब, अभी साउंड पड़ेगा। कैसे बैठ सकते हैं? The microphone is as loud as possible for half an hour. You've been shouting. You've been shouting for half an hour. You shouted. You shouted. Yes, yes, Listen to me. Listen to me. You shouted. You will not have shouted the other times. Shouting for half an hour. Learn. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me in the back? Man with the glasses and nice tilak. You can hear me? पीछे Clear? सुन सकते हैं आप? सुन सकते हैं? सुनाई दे रहा है? I think they should turn it down a bit. You say up? Why, your glasses have to rattle every time I say a sentence? Well, let's turn it up just a little. Can you hear me or can you hear him? किसको सुन सकते हैं? महाराज को सुन सकते हैं आप? सुन सकते हैं? जैसे mine is okay, yours. I think it's because you've had the microphone on so loud for the last half hour, you're half deaf. महाराज कह रहे हैं कि आपने इतना जोर से सुना इसलिए आधे घंटे से तो थोड़ा आप बहरे हो गए। They can hear you in Jaipur. जयपुर में सुनाई दे रहा है यहाँ से। We can just shanti. कुछ मत कीजिए। Now, a little housework first. तो कुछ नियम बताएंगे महाराज। I'm insignificant, महाराज कह रहे हैं वो तुच्छ है, but the message of Bhagavatam is important. पर भागवतम का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। So two things, दो नियम बताएंगे महाराज, because we need attention. क्योंकि हमको ध्यान रखना है। If you have a cell phone, तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है, you will be shocked to learn आप हैरान होंगे ये जान के there is an off button. इसको बंद भी कर सकते हैं हम। There's an off button. आप बंद कर सकते हैं हम, You can turn it off. उसको बंद कीजिए, कर सकते हैं। Now, when I say that, 50% of the people hear it. तो जब महाराज ने ये कहा है, केवल 50% ने सुना है ये कि बंद करना है। In our temple in London, लंदन में जो हमारे इस्कॉन का मंदिर है, if your cell phone goes off during the talk, अगर प्रवचन के दौरान आपका फोन बजता है, you have to donate the equivalent of 500 rupees in the deity hundi. तो आपको 500 रुपया दान में देना पड़ेगा हुंडी में। When I say that, तो जब महाराज ये कहते हैं, the other 50% turn off तो their बाकी के phone. 50% लोग अपना फोन ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। So if your phone goes off, तो अगर फोन बजता है, where's the hundi? डोनेशन बॉक्स, Donation box where you get darshan and you can put your तो 500 rupees दान in. पेटी अंदर है, तो वहाँ 500 रुपया देना पड़ेगा आपको। The other thing is small children. और दूसरा नियम है, छोटे जो बच्चे हैं। I raised 2 children myself as a single parent. महाराज पहले गृहस्थ थे, सिंगल पेरेंट थे, तो उन्होंने 2 बच्चों का पालन किया उन्होंने। I know that it's not easy. तो उनको पता है कि मुश्किल है, ये बहुत सरल नहीं। But when they start to make a lot of noise, पर जब वो बहुत शोर मचाते हैं, I know every parent thinks, oh, they're chanting Bhagavatam. तो हर ना माँ बाप को लगता है अरे ये तो भागवतम का गान कर रहे हैं। But everyone else is distracted. पर बाकी सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान हट जाता है। So every child gets 3 American baseball strikes. तो हर एक बच्चे को 3 चांस मिलेगा। Once, एक बार, twice, दूसरी बार, third time, तीसरी बार जब रोएंगे या शोर मचाएंगे, bye bye, my little friend. बाय बाय, उनको जाना पड़ेगा। Is that okay? ये ठीक है? It's okay? All सब right. सहमत है? हरि बोल। Because again,
I'm insignificant, but the message is important. तो फिर से महाराज कह रहे हैं कि वो तुच्छ है, पर ये जो संदेश वो बोलने वाले हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now we also need. I don't know if he's in the arena. Who's that little boy? Okay, do we have a clock anywhere? There's a clock. Is it correct? It's 10 to 7? Okay. How long does the talk usually go? कितने समय तक, कितने बजे तक जाते हैं? Because I know when I'm done, there's prasadam, right? क्योंकि महाराज को पता है कि प्रवचन के बाद प्रसाद है. So I realize the pressure I'm up against. तो महाराज पे बहुत दबाव है कि इतना. I mean, you've already been sitting here through a lecture for half an तो hour. आप आधा घंटे से प्रवचन ही सुन रहे थे. So I don't want to make you sit too long. तो वो आपको ज़्यादा बैठाने नहीं चाहते. So what is our usual time for ending? Oh, we won't go that long. इतना लंबा नहीं खींचेंगे. We won't go that long. All right. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pacharani Nirvasesha Sunyavadi Paskacharya Satarani Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So I thought, I've been traveling for the last 9 days through Rajasthan. तो पिछले 9 दिनों से महाराज भ्रमण कर रहे हैं राजस्थान में. I must say I first came to Rajasthan in 1973. 1973 में पहले बार महाराज राजस्थान आए थे. I came to see Govindaji. गोविंद देव का दर्शन करने आए थे महाराज. Something just happened. Where's our sound man? Now, walk away. दूर हो जाओ, Walk away. दूर हो जाओ, और दूर हो जाओ. Come and sit down बैठ जाओ, and do not touch. छुआ मत. Sound men love to spin. Have we lost your sound? Yes. Okay, fix his sound and then do not touch. Did the battery die? हरे कृष्ण, It's a great world, isn't it? हरे कृष्ण, हरे So कृष्ण. what's up? Anyway, we'll carry on. What's up? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, Can I? Battery's dead? हरे कृष्ण, Can you hear him in the back? No. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. It's the same story. Okay, well, let's share. You want to share? You can share. I'll try to speak loud. But they can't hear. सुनाई दे रहा? ठीक. हरे कृष्ण. This is better? All right, now we'll try it again. Okay. So I thought, this is my last night here. तो आखिरी रात है यहाँ महाराज की. I thought we would have a little fun. थोड़ा मजा करेंगे. मजे. I'm going to ask you questions, तो महाराज कुछ प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से. and you can give answers. आप उत्तर दे सकते हो. And the questions are on two things. तो ये जो प्रश्न पूछेंगे महाराज 2 चीजों पे आधारित है. One, these are analogies from Bhagavad Gita. तो कुछ उपमाएं हैं भगवद गीता से. And then the other part, depending on how much time we have, और दूसरे जो भाग है ये डिपेंड करता है कितना समय रह गया. is from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. तो भागवतम का जो 11वां स्कंद है उससे है. It's called Enlightenment from the Natural Path. तो उसका ये शीर्षक है एनलाइटमेंट फ्रॉम द नेचुरल पाथ. And the reason I picked these तो कारण क्यों है कि महाराज ने ये चुना? is because sometimes there's the impression क्योंकि कभी-कभी ये सोचते हैं that spiritual life is one thing कि आध्यात्मिक चीज एक चीज है, आध्यात्मिक जीवन एक चीज है, and my practical day-to-day life experience is something और else. जो हर रोज का जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका जो अनुभव है वो दूसरा चीज है. I guess this is going to continue. Why don't you and I share? Because I don't
we can't, this is too distracting. No, it's too distracting. We'll just share. Okay? We'll try it again. But actually, Bhagavad Gita and Bhagavatam are very, very practical. तो वास्तव में भगवद गीता और भागवतम बहुत प्रैक्टिकल होते हैं जीवन में. We have this quote, Om Agena Timarandasya Gyana Gena Salakaya Chakshushim Militan Gina Tazari Shri Gurave Namaha. तो ये प्रार्थना है ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. That one of the gifts of the Vedic literature is to see through the eyes of Shastra. कि वैदिक शास्त्रों का ये एक उपहार है कि उनके द्वारा उनके माध्यम से हम देख सकते हैं. So we'll get started. Some baby is crying. Where is this baby? That's one strike. No, you get three. That's one. तो एक हो गया और दो मौका है. That's one. You get two more. दो और मौका. We'll see how it goes. देखते हैं कैसे चलता है. Okay, hold on a sec here. We seem to be having an issue with technology today. Okay, now, why is knowledge, transcendental spiritual wisdom, why is it like a boat? तो दिव्य ज्ञान जो है वो नाव की तुलना में क्यों बोला गया, क्यों नाव की तरह होता है? Anyone want to guess why knowledge, wisdom is like a boat? तो कोई बताना चाहता है कि दिव्य ज्ञान जो है वो जहाज के जैसा या नाव के जैसा क्यों होता है? If you guess and get the wrong answer, तो अगर आप जवाब दे दो पर फिर भी गलत है, you will still get prasadam. तब भी आपको प्रसाद मिलेगा. So you can relax, don't worry. We're friends here, don't worry. रिलैक्स हो जाए. Okay, so why is knowledge like a boat? तो दिव्य ज्ञान को नाव की तरह क्यों बताया गया? Anyone want to guess? Don't be shy. शर्माइए मत, आप बता सकते हैं. Yes, sir. Because वो भव सागर से पार कर देता है दिव्य ज्ञान. Because it helps us to cross the ocean of matters. We need to realize where we are. ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ हैं. Now, I don't know if they do it here, but I bet they do. महाराज कह पता नहीं कि क्या ये करते हैं यहाँ पर उनको लगता है कि करते होंगे. When you go to a mall or a big shopping center, there's a map that says you are here. जब कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ एक मैप होता है तो कहते हैं कि आप यहाँ हो, नक्शा होता है. And you look at the map, you can figure out where you are. तो जब नक्शा को देखते हैं तो आपको पता होता है आप यहाँ हो. And then you look and see where you want to go. और आप देखते हो रास्ते को देखते हैं कहाँ जाना है आपको. And then you figure out the route. और आप रास्ते को पता चलता है आपको कहाँ जाना है. Most people are just lost in this world. अधिकांश लोग जो है इस संसार में खोए हुए हैं. Srila Prabhupada said they're being kicked like a football, like in soccer, the ball's just being kicked this way and that. तो प्रभुपाद कहते हैं उनकी स्थिति ऐसा है जैसे फुटबॉल में होता है, लोग जो है प्लेयर्स जो होते हैं बॉल को किक करते हैं, लात मारते हैं. But human form of life is not meant like that. पर मनुष्य जीवन इस कार्य के लिए नहीं होता है. As they say in America, we're meant to get ahead of the game. We're meant to see where we're going. We're meant to take control of our fate. तो जैसे अमेरिका में कहते हैं कि हमको अपने जो किस्मत है उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है. And where we are is in an ocean of birth and death. और जहाँ हम हैं वो क्या है, बहुत सागर है, जन्म मृत्यु का सागर है ये. Nobody likes to think about it. तो कोई उसके बारे में सोचना पसंद नहीं करता है. But Krishna says, "Time I am." और कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कालोस्मी के वो काल है. The destroyer of all things. सबको विनाश करने आते हैं वो काल के रूप में. So do we want to stay here forever, trying to light a fire and having it go out, trying to light a fire and have it go out? Or do we want to cross over the ocean of birth तो and हम death? क्या चाहते हैं इसी संसार में भरे रहे हम, जैसे आग को जला के फिर से बुझा रहे, आग को जला के फिर से बुझा रहे, या उसको पार करना चाहते हैं हम. So knowledge is like the boat that helps us cross over all the suffering of this world. तो दिव्य ज्ञान जो है वो नाव की तरह है जो हमको पार करने में मदद करता है. ये जो भव सागर है जिसमें दुखों का सागर है.
Why is knowledge like a fire? तो अब महाराज दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान है वो आग की तरह क्यों है? We had one of the men get, yes, Mataji. It eradicates the ignorance. It burns up ignorance, अज्ञानता को जलाता है। specifically in the Bhagavad Gita. और भगवद गीता में It says that it burns up karmic reaction. तो कर्म के प्रतिक्रिया को जलाते हैं। If we act in knowledge, अगर ज्ञान के साथ हम कार्य करते हैं, that knowledge, there's no karmic reaction. We're suffering action, reaction, action and reaction. तो हम भोग रहे हैं कर्म और प्रतिक्रिया को भोग रहे हैं। और जब हम ज्ञान के साथ कार्य करते हैं तो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। And how to get out of that cycle? उस कर्म के जो चक्र है उससे कैसे हम छुटकारा पाए? But if we act in spiritual knowledge, जब हम दिव्य ज्ञान के साथ कार्य करते हैं, then we become free from the cycle of action and reaction, papa and punya. तो पाप पुण्य कर्म प्रतिक्रिया के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। Why is knowledge like a sword? नॉलेज दिव्य ज्ञान को तलवार की तरह क्यों कहा गया? Anyone want to guess? Why? You already had one. Anyone else want to guess why knowledge is like a sword? Huh? दिव्य ज्ञान I know को you know. तलवार की तुलना में क्यों किया गया? Anyone else? Yes, sir. It can cut through the knots of entanglement in this world. तो ये जो है दिव्य ज्ञान जो है जो ग्रंथि है इस संसार के ना जो बंधन है उसको काट सकते हैं। We're bound up with so many misconceptions. तो कई गलत धारणाओं से हम बंधे हुए हैं संसार में। We're bound up with attachments. तो कई आसक्तियां हैं। We're bound up lust, anger, greed, so many things. अनर्थों के माध्यम से What to हम do? बंधे हुए काम क्रोध लोभ और ये सब। But the sword of knowledge in Bhagavad Gita can cut through all of that. दिव्य ज्ञान भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान है तलवार की तरह वो सबको काट सकते हैं, सब कुछ को काट सकते हैं। Why is knowledge compared to shoes? तो ज्ञान को जूते के तुलना में क्यों किया गया? Now I know shoes are unclean, usually we don't use it, but तो महाराज को पता है कि जो जूते होते हैं वो बहुत है ना मूछी होते हैं। I almost gave you a hint, but I'm not going to do it yet. I know you know. महाराज ने We'll, संकेत किया पर two more and then it's your turn. Okay? Does anyone know why knowledge is like shoes? तो किसी को पता है कि ज्ञान को क्यों जूते This के one you have तुलना to में think किया गया? about. You have to think about this one. सोचिए उसके बारे में। Do you need a hint? Want a hint? संकेत चाहिए आपको? Anyone want to guess or do I give you a hint? कोई जवाब देना चाहता है? What do you think? Are we ready for a hint? You want to guess, sir? Oh, you were scratching your face. Sorry, sorry about that. आपको लग रहा था हाथ I thought we had a उठाया। brave soul. जैसे माता जी। Where? Oh, yes, Mataji. If we don't wear shoes, thorns will get in our Very intelligent. If I walk on a path barefoot, अगर नंगे पैर चलेंगे एक rocks, रास्ते sticks, stones, so many things. में, तो पत्थर न कांटे ये सब चुभे। I put on shoes, अगर जूते पहनेंगे I can cross very easily. बहुत आसानी से चल सकते हैं। Life is not meant to be a constant struggle. तो जीवन जो है केवल परिश्रम के लिए नहीं है। And if we're armed with knowledge, और अगर We ज्ञान know- है हमारे पास, those are the shoes that help us traverse the path of life. तो वो जूते हैं ये जो ज्ञान है वो हमको मदद करते हैं जीवन का जो राह है उस पे चलने के लिए। Your time is well spent reading the Iskcon books by Srila तो Prabhupada. जब इस्कॉन के जो पुस्तक है जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं तो आप सही से अपना समय को आप यूज करते हो, प्रयोग करते हो। It's not just a pious activity you learn from your grandmother, read Shastra. तो ये ऐसा नहीं कि कोई पुण्य का काम है कि आप क्योंकि आपकी दादी ने कहा पढ़ने के लिए तो आप पढ़ रहे हो। They are swords. They are the fire that burns up karma, the sword that cuts through illusion, the boat that carries across distress. It's the shoes that help us traverse the path of life. तो ये जो पुस्तक है वो क्या है? वो तलवार है जो अज्ञानता को काटते हैं, वो आग है जो कई अनर्थों को जलाते हैं, वो नाव की तरह है जो हमको पार करते हैं इस संसार से,
और जूते हैं जो हमको जीवन के राह में चलने के लिए मदद करते हैं। Now we're going to switch to the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. तो 11वें जो स्कंद है भागवतम का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। And there's a section there, it's called Enlightenment from the Natural Path. तो एक संदर्भ है, एक भाग है जहाँ enlightenment from the natural path का शीर्षक है। One of our acharyas, one of our great teachers in our Vaishnava line, तो एक महान आचार्य जो हमारे परंपरा में है, he said that this world is a dictionary for the spiritual world. तो वो कहते हैं ये जो संसार है ये शब्दकोश है आध्यात्मिक संसार के लिए। We can learn spiritual truth by studying the material nature, things of this world. तो प्रकृति को देखकर हम आध्यात्मिक जगत के बारे में सीख सकते हैं। I'll give you an example. एक उदाहरण देंगे महाराज। Have you ever heard how can you say the supreme cause of all causes has a form, Shama Sundar, Narayan, Rama? How can you say this? तो आपने शायद ये सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं आप कि जो सब कारणों का कारण है वो उनके पास आकार कैसे हो सकते हैं श्याम सुंदर के रूप में। You're saying that the unlimited is limited by a form. तो आप कह रहे हैं जो असीमित है वो सीमित हो गए रूप से, आकार से। You ever hear that? आपने सुना ये? They say it all the time. हर समय कहते हैं ये लोग। It's a very superficial understanding. तो बहुत ही सुपरफिशियल समझ है ये। What is something that we see, especially in beautiful Rajasthan, almost every day? तो वो क्या चीज है जो हम देखते हैं ना राजस्थान में, जो सुंदर राजस्थान है वो देखते हैं, हर रोज हम देखते हैं उसको, That is both present everywhere जो हर जगह व्याप्त है and has a form और उसका एक आकार रूप है and has a location. और उसका एक जगह है जहाँ वो रहता है। Something we see every day, ऐसा चीज जो हर रोज देखते हैं हम, present everywhere, हर जगह वो है, व्याप्त है, and yet has a form and a location. फिर भी उनका एक आकार है, एक रूप है और एक जगह पे रहता है। Anyone want to get? The ladies are ahead of the men. You already had one. Yes, sir. Sunlight. Give somebody else a chance. That's what I say, sunlight. Sunlight. Defend your answer, young man. बताइए कैसे? प्रकाश जो हम लोग को हर एक चीज को देखने में मदद करता है, ये ज्ञान की जगह है। What does he They say? say light helps us to see everything around us. So the sun is shining everywhere. तो जो सूर्य है हर जगह ना रोशनी दे रहा है। And yet I can point, oh, there's the sun. और फिर भी हम Isn't it? सूर्य की तरफ It has a location, it has a form, and it's hey, Mataji, that's one. एक That's not yours. Ooh. Do we have anyone want to take claim? कोई No one's taking claim. किनका है? Acha. Huh? Where's the mother? कौन है माँ? All right, so be it. Hare Krishna, my little friend. Okay, so, and yet they say the source of unlimited suns. तो सूर्य एक जगह है और हर जगह वो व्याप्त है अपनी किरणों के माध्यम से, पर फिर भी लोग कहते हैं कि करोड़ों सूर्य का जो स्रोत है, One sun, present everywhere, and yet has a form and a location. तो एक सूर्य हर जगह व्याप्त है, फिर भी उनका एक आकार है और एक जगह पे है। But the creator of unlimited suns, और he can have a form and simultaneously be present everywhere. तो जिन्होंने इतने सारे सूर्य सैकड़ों करोड़ों सूर्य बनाया है, तो उनके पास आकार नहीं होगा और वो हर जगह नहीं रह सकते हैं। Help me out with the logic of और that. बताइए ये कैसे ना लॉजिकल है? Brahmaneti, Paramaneti, Bhagavaneti, Shabdyate. श्लोक है ये भागवतम से, ब्रह्मनिति, परमार्थनिति, भगवानिति, शब्दनिति। Bhagavatam says God is present everywhere, भागवतम कहते हैं भगवान हर जगह व्याप्त है, present in everyone's heart, हर किसी के हृदय में विराजमान है, and simultaneously has his own place. और उसके बावजूद उनका अपना लोक है। If you remind me later on, I'll tell you a joke later on, if we have time. महाराज को याद दिलाएंगे तो चुटकुला बताएंगे महाराज। Okay, so here's another one. What can we learn from a tree? तो वृक्ष से क्या सीख सकते हैं हम? कोई बताना चाहते? Anyone want to guess something? Yes, Mataji. Wait.
when a tree bears fruit, it bows down. Oh, that's very good. I hadn't thought of that. 10 extra points for you. Just mark She was saying that a tree तो वो कह रही थी full of fruit, it bows down. तो जब एक वृक्ष को फल से भरा हुआ है तो वो नीचे झुकता है. So a person full of knowledge, they're actually humble. तो जो व्यक्ति के जिनके पास बहुत ज्ञान है तो वो क्या करते हैं, वो विनम्र बन जाते हैं. In Bhagavad Gita, it lists all the different qualities of knowledge, of wisdom. तो भगवद गीता में ज्ञान के जो लक्षण है उसमें बताया गया. The first quality is humility. पहला गुण जो है ज्ञान का वो है विनम्रता. And Prabhupada says in the purport, it's the key that opens wisdom is humility. तो प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में लिखते हैं कि जो विनम्रता है वो विज्ञान की चाबी होती है. Now, what's something else we can learn from a tree? और क्या सीख सकते हैं वृक्ष से? You can guess. All right, Mataji. Tolerance. Huh? Very tolerant. सहिष्णु, सहन करना, सहन शक्ति. It's hot, it's cold. गर्मी है, सर्दी है. Tree never says, hey, I'm out of here. तो वृक्ष ये नहीं करे और मैं जा रहा हूँ. I'm going to the Himalayas, too hot here. मैं हिमालय में जा रहा हूँ, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है. So we can learn to be tolerant like a tree. तो वृक्ष से हम सहिष्णु. Because hot and cold will come. It's coming and going, hot and cold. गर्मी सर्दी आते जाएंगे. People in this world are trying to control conditions. तो लोग इस संसार में स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. I heard a phone. फोन बजा. Mataji. We'll let you slide this time. Next time, it goes off again. अगली बार तो बजेगा तो डोनेशन देना पड़ेगा. So we learn to be tolerant because we have a world that's everyone's trying to fix conditions. तो हर किसी कोई जो है संसार में स्थितियों को फिक्स कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है. If I just had more money, कुछ लोग सोचते हैं अगर ज़्यादा पैसा होगा मेरे पास, if I just lived somewhere else, अगर कहीं और रहूँ मैं, if I just had another wife, अगर एक और पत्नी होती, and the wife is thinking, if I just had another husband, और पत्नी ये सोचेगी अगर It works और- both ways. एक और पत्नी होता तो you know, everyone's thinking, if I just had another job, if I just had a, तो सब यही सोच कि अगर मेरा एक और जॉब होगा या ना ऐसे ही सोचते रहते हैं. Here's another analogy from that Bhagavatam section. तो एक और उपमा देंगे महाराज जी उस भागवतम के सेक्शन से. The farmer is working in the field, जो खेती करते हैं वो खेत में काम कर रहे हैं and it's hot, और बहुत गर्मी हो रही है. and he's out there, he's making the bull work. It's hard work. बैल को काम करवा रहे हैं तो बहुत परिश्रम कर रहे हैं वो. And he's thinking, I'm working so hard. तो वो सोचे मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ And then I just take everything to the grain merchant. और मैं क्या करता हूँ अनाज को जो व्यापारी है उनको देता हूँ मैं. And he's sitting down inside AC. और वो बैठा है कक्ष में जहाँ एसी है. If only I was the farm merchant. If only I was the excuse me. The farmer is thinking, if only I was the grain merchant, I'd be so happy. तो जो खेती करते हैं वो सोचे अगर मैं व्यापारी होता तो मैं ज़्यादा खुश रहता. Now what is the grain merchant thinking? जो व्यापारी वो क्या सोच रहे हैं? The grain merchant is thinking, all these farmers are coming. तो वो सोचे जो खेती वाले वो सब आ रहे हैं. They're putting half the bags are not full all the way. They're putting in some little rocks to cheat me on the weight. It's such hard work dealing with this. धोखा दे रहे हैं, कई चीज डाल रहे हैं बोरियों में ना, तो वो सही से काम नहीं कर रहे हैं. And what for? और किस लिए? The government tax man comes, takes half my money. जो गवर्नमेंट के व्यक्ति होते हैं वो आते हैं आधा पैसा ले लेते हैं मेरे से. He's not doing any hard work. वो तो कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं वो. If I was the tax man, I'd be so happy. तो अगर वो सोचे व्यापारी सोचे अगर मैं टैक्स व्यक्ति जो टैक्स लेता है वो होता तो मैं ज्यादा खुश रहता. Now what is the tax man thinking? और जो टैक्स लेता है वो क्या सोच रहे हैं? He's thinking, nobody likes me. कोई मेरे को पसंद नहीं करता, ये सोचते हैं. I knock on their door, I go to say hello. उनके यहाँ जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ. Lights go out, when curtains come down, click, door is locked. तो वो लोग क्या करते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं, खिड़की को बंद करते हैं और दरवाजा को लॉक कर देता है. I sit down next to them at a wedding, everybody moves. तो जब शादी में किसी के पास बैठा सब मेरे से भाग जाते हैं, मेरे दूर भागते हैं. And what for? और किस लिए? I have to give everything to the king. सब कुछ राजा को देना है मुझे. If I was the king, I'd be so तो happy. वो सोचा अगर मैं राजा होता तो खुश रहता.
Now, what is the king thinking? अब राजा क्या सोच रहे हैं? The king is thinking, there's a line in Shakespeare, heavy lays the head that wears the crown. तो शेक्सपियर कहते हैं जिस सर पे ताज होता है तो वो बहुत ही भारी होता है। It's hard being the king. तो बहुत मुश्किल होता है राजा होना। You ought to got to worry about someone may attack. तो हम हमेशा ये डर रहता है कि कोई आक्रमण करेगा। You may have someone who's trying to plan some coup to throw you out. तो हर जो कई लोग होते हैं जो साजिश करते हैं उनको हटाने के लिए। If you're a good king, you've got to worry about a drought, how to take care of the तो citizens. अगर अच्छा राजा है तो उनको ध्यान रखना पड़ता है जो प्रजा है। It's hard work. तो बहुत ही परिश्रम है। So what is the king thinking? तो राजा क्या सोच रहे हैं? He's sitting in his throne room dealing with all the problems of the kingdom. तो सिंहासन में बैठे हैं और हर किसी का समस्या का समाधान सोच रहे हैं उसके बारे में। और He's looking out his window तो वो खिड़की से देख रहे हैं and he sees the farmer और खेती वाले को देखते हैं and he thinks, look at that farmer. तो वो सोचे ये देखो वो Not a care in the world. उसका कोई चिंता ही नहीं। Fresh air, sunlight. If only I was the farmer, I'd be so happy. ताज़ा हवा मिल रहा है उनको, उनका जीवन बहुत आसान है। काश मैं खेती करता। You follow me? Everyone's thinking the person next to them must be so much happier. तो हर कोई सोचे कि जो अगले व्यक्ति है वो मेरे से ज़्यादा खुश है वो। But everybody's dealing with conditions पर सब स्थितियों से झेल रहे हैं, वो अपनी स्थितियों में परेशान हैं, which we can't control. जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। Did anyone see COVID coming? Anyone here? Raise your hand if you predicted क्या COVID. किसी को पता था कि कोविड आएगा? किसी ने भविष्यवाणी किया कि किसी को पता था कि कोविड आएगा? Whole world shut down. पूरा संसार बंद हो गया कोविड It's से। just a little bug. तो है ना, छोटा सा तुच्छ सा वायरस है। So we cannot control conditions. तो हम स्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। What can we control? पर हम किस पे नियंत्रित कर सकते हैं? Yes. What did she say? Sorry? She's got the right answer. she got. The way we deal with the You got the right. She's saying we can't control conditions, स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। but we can control how we respond to तो conditions. कैसे उन स्थितियों पे हम व्यवहार करेंगे उस पे हम नियंत्रित कर सकते हैं। We can think, why me? हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ? Or we can think, what can I learn from this? या हम ये सोच सकते हैं मैं क्या सीख सकता हूँ? How can I grow? कैसे मैं और आगे बढ़ सकता हूँ? So that we can't change conditions, we can change our consciousness. तो स्थितियों को बदल नहीं सकते हैं पर अपने चेतना को बदल सकते हैं हम। Okay, here's something else we can learn from a tree. एक दूसरी बात है जो हम वृक्ष से सीख सकते हैं। Oh, that's again that independent boy. Okay. We give fruit, the tree gives fruit and it gives shade. तो वृक्ष जो है फल देता है और छाया देता है। Does it discriminate? क्या वो पक्षपात करता है वो? Does it say, oh, no shade for you, sorry, tough luck. Its branches bend up and you don't get any shade, someone else comes that likes, then it provides shade. तो किसी को कहते नहीं आपको नहीं दूंगा तो अपने डालियों को हटा देते हैं पर अगर कोई और आता है जिनको वो पसंद करते हैं उनको छाया देता है। क्या ऐसे व्यवहार करते हैं वृक्ष? So we can learn from a tree to be tolerant. तो वृक्ष से सहिष्णु होने सीख सकते हैं हम। We can learn to be humble. विनम्रता सीख सकते हैं। And we can learn to be kind and charitable to all और ये without सीख सकते हैं discrimination. कि दयावान होना और अच्छा होना हर किसी के साथ। What can we learn from the ocean? सागर से क्या सीख सकते हैं हम? समुद्र से। When you look at the ocean, what's happening on the surface? This is a big hint. तो जो सागर के सरफेस पे क्या होता है? I know you know. Anyone want to guess? When you look at the ocean, what do you see on the surface? ऊपर क्या दिखता है समुद्र पे? Huh? What? So many waves. So many waves. Tossing and turning. लहरें होते हैं। If you go down deep into the ocean, what is its situation? गहराइयों में जाते हैं तो क्या होता है? It's very calm. बहुत शांत है। Now, so many rivers are entering into the तो ocean. कई नदियाँ होते हैं जो समुद्र में जाती हैं। I mean, India has so many big and beautiful rivers. तो भारत में बहुत कई ना ऐसे नदियाँ बहुत बड़ी नदियाँ बहुत सुंदर नदियाँ होती हैं। And they're pouring into the ocean. और सब समुद्र में जा रहे हैं। And think about it. Look at, when you go home tonight, आप जब घर जाएंगे आज,
Do a Google images गूगल में देखिए आप, and look at the mouth of the Amazon. तो अमेज़न जो रिवर है ना अमेरिका में, उसका आप मुंह को देखिए आप। Billions, with a B, billions of gallons of water are pouring into the Atlantic Ocean at every moment from the Amazon. सैकड़ों करोड़ों जो है ना पानी, लीटर्स गैलन पानी जो है वो अटलांटिक ओशन में जा रहे हैं। Add to that the Nile, नाइल, add the Congo, कॉन्गो जो रिवर है, add the Mississippi. मिसिसिपी रिवर जो होता है, I mean, what to speak of Mother Ganga. और गंगा, Just billions and billions of tons of water are pouring into the ocean at every second. करोड़ों करोड़ों गैलन पानी जो है वो समुद्र में जा रहा है हर एक क्षण में। If I have a glass of water and I keep pouring water into it, what तो happens? अगर मेरे पास एक गिलास पानी है और उसमें पानी डालता रहता हूँ तो क्या होता है? What happens to the glass? क्या होता है इस गिलास को? It overflows. तो पानी बाहर आ जाता है। But we don't find the ocean on the shoreline moving an inch. You know, there's a little bit of tide, but it's not moving if you calculated all the water. तो हम देखते हैं जो समुद्र है ना वो अपने तट को पार नहीं करते, उसी जगह पे ही रहते हैं। Sometimes people think, तो कभी-कभी लोग सोचते हैं when I take up spiritual life, कि मैं जब अध्यात्म को अपनाऊंगा there should be no more difficulty. तो कुछ समस्या नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। I'm chanting Hare Krishna, why is there difficulty? तो अगर मैं हरे कृष्ण का जप कर रहा हूँ तो समस्या क्यों आ रही है? But this world, by its very nature, is like the ocean. तो ये जो संसार है स्वाभाविक तौर से वो एक समुद्र है ये। There's always disturbance. हर क्षण परेशानियां होती हैं। There's disturbance of the mind. It's Adi-Daivik, Adi-Atmak, Adi-Bautik is the way the Vedas divided. जैसे वेदों में बताया गया आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। There's disturbances in the mind. कि मन हमको परेशान करते हैं। There's disturbances in the body. कि शरीर जो है हमारे परेशान करते हैं। Other people are causing us distress. अन्य लोग जो है हमको परेशान करते हैं। And then it's too hot, too cold, earthquake, COVID, so many things. कभी भूकंप होता है, कभी ना ज़्यादा गर्मी होते हैं, कोविड आता है, ज़्यादा सर्दी होते हैं, ये सब होते हैं। The fact of the matter is, this world is a disturbing place. तो सच ये है कि ये जो संसार है उसमें कई परेशानियां हैं। But one who's deep in their confidence in Krishna, तो जो बहुत गहरा है कृष्ण भावनामृत में, one who's deep in their wisdom and knowledge of Shastra, तो ज्ञान के शास्त्रों के ज्ञान और विज्ञान में बहुत गहरा है व्यक्ति, they're like the ocean. वो समुद्र की तरह है। Even though so many rivers of agitation are entering, they're steady and peaceful. तो कई ऐसे नदियां जो है परेशानियों की नदियां आते हैं उनमें, फिर भी वो शांत रहते हैं। I'm trying to encourage you that Krishna consciousness is worth it. तो महाराज आपको प्रोत्साहित करते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है वो करने लायक है ये। It's not just maybe when I die I go to Vaikuntha, well, we'll find out. तो ऐसा नहीं कि जब मृत्यु आएगी तब मुझे पता चलेगा कि हाँ वैकुंठ भी है। As we become deeper in spiritual life, all of these results come. One's peaceful, one's calm, one's tolerant, one's patient, तो जितना आगे बढ़ते one's हैं determined. आध्यात्मिक जीवन में, तो इतना ही सारे ये गुण विकसित होता है कि ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ज़्यादा सहिष्णु बन जाते हैं, ज़्यादा धैर्य बन जाते हैं हम। So we'll do a few more, then we'll finish. तो कुछ और उदाहरण या ऐसे प्रश्न पूछेंगे महाराज, फिर विराम देंगे। What can we learn from the moon? चंद्र से क्या सीख सकते हैं हम? This one's a little difficult. Let me ask you this. What is the, hang on. You want a hint or you want to go for it? They are giving the answer. The moon gives coolness. Okay, the moon gives coolness. That's good. बहुत अच्छा है। You get 10 points. 10 मार्क्स मिलते हैं आपको। And an extra gulab jamun. और एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मिलेगा। But the Bhagavatam gives a little different angle. What does the moon go through? तो जो चंद्र है वो किस Every month we see different phases of the moon. तो महीने में चांद जो है अलग-अलग फेज पे जाते हैं। Now, hang on, Mataji. I appreciate your enthusiasm. आपका उत्साह अप्रिशिएट करते हैं। Now, does the moon actually change its shape? क्या मून चांद का आकार क्या वास्तविकता में वो बदलता है क्या? Any men in the back? Does the moon change its shape? कोई पुरुष कहना चाहते हैं क्या? Well, hang on a minute. I see a crescent moon. I see a half moon. I see a full moon. तो हम देखते हैं पूर्णिमा होते हैं या चांद आधा होता है, तो अलग-अलग आकार का है।
But does the moon actually change its shape? तो क्या वास्तव में चांद जो है वो अपना आकार को बदलता है? No, it doesn't change its shape. नहीं, वो बदलता It's नहीं। our perception, the way the sun is reflected and all that. It's our perception. The moon doesn't change. ये हमारे नजरिया है एक्चुअली कि जितना रोशनी आते हैं सूर्य के द्वारा चांद पे तो उतना ही दिखाई देता है हमको। Does anyone here know the riddle of the Sphinx? तो कोई जानता है स्फिंक्स का जो रिडल होता है? Yeah. इजिप्ट में स्फिंक्स होता है तो What animal तो कौन सा पशु walks on 4 legs in the तो morning, 4 पैरों पे चलता है सुबह, 2 legs at noon, दोपहर में 2 पैरों पे चलते हैं and 3 legs in the evening? और 3 पैरों पे चलते हैं शाम को? Anyone want to guess what animal? 4 legs in the morning, 4 पैरों पे चलते हैं सुबह, 2 legs at noon, 2 पैरों पे चलते हैं दोपहर को and 3 legs in the और evening. 3 पैरों पे चलते हैं शाम को। I saw a hand. Yes, sir. Human being. मनुष्य। Defend your answer. बताएं क्यों? 4 legs, how? In the childhood. As a baby, they're crawling on 4 legs. Okay, बच्चे के रूप में- that's 1/3. Now, young man is 2 legs. युवक के रूप में वो 2 पैर पे चलते हैं 3 legs. और 3 Oh, man. So the body is changing. तो शरीर बदलता जा रहा है। What does not change? क्या बदलता नहीं है? Hmm? Hmm? The Atma, we don't change. आत्मा या हम नहीं बदलते हैं। The soul doesn't change. आत्मा बदलती नहीं है। So we can learn all these different faiths. I'm not black, I'm not white, I'm not old, I'm not young, I'm not thin, I'm not fat. I'm Nitai Swarup position. तो ये चांद से सीख सकते हैं कि आप काले नहीं, गोरे नहीं है, लंबे नहीं, मोटे, ये सब नहीं है। हम क्या है? हम हमारे जितने स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं। This is a good one. What do we learn from a bee? Zzz, you know, bee. मधुमक्खी से क्या सीखते हैं हम? I'll give you a hint. एक संकेत देंगे महाराज। What are bees very busy doing? तो मधुमक्खी क्या करते हैं? क्या किसमें ना व्यस्त रहते हैं वो? Hmm? What are they doing? What are bees doing? मधुमक्खी क्या The ladies are ahead of you, men. They got more points. करता है सभी? Come on. What are bees busy doing? मधुमक्खी क्या कर रही है? Huh? They're making honey. They're making honey. शहद बना रहे हैं। And bees work hard. और जो मधुमक्खियाँ होते हैं वो बहुत परिश्रम करते They हैं। have different sayings in English. They say busy as a bee. तो इंग्लिश में कहावत है कि बिजी रहना है ना, बी के तरफ, मधुमक्खी के तरफ बिजी रहते हैं। You never see a bee just, as they say in America, chilling out. ऐसे नहीं He's देखते। never just taking a break. Hey, कोई मधुमक्खी को देखने के बस रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। I'm going to have a limca. I'm taking a वो break. लिमका पियेंगे, वो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। काम- Busy as a bee. They say to make a beeline, you know, zit, they go zit, zit, they're very busy. तो जो मधुमक्खी होते हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं And they're busy making honey. और वो व्यस्त रहते हैं शहद बनाने में। But what happens? What does the beekeeper do? और जो शहद जो मधुमक्खी को पालते हैं वो क्या करते हैं? He comes with the smoke, तो वो आते हैं धुआं के stuns all the साथ, bees, तभी जो मधुमक्खी है उसको बेहोश कर देते हैं and takes the honey. और शहद को ले लेते हैं वो। So we're working hard. Everybody's working hard. तो हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं। Now, don't get me wrong. I'm not advocating lazy. तो ये ना महाराज को गलत मत समझिए कि वो आलस को वो प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। One of the symptoms of a devotee is they do not waste time. तो एक लक्षण भक्त का एक लक्षण है कि वो समय को गवाते नहीं हैं। But people work so hard. पर लोग बहुत परिश्रम I, करते हैं। I saw a bumper sticker in America, एक बार एक स्टिकर को देखा महाराज ने, and it said, "The one who dies with the most toys wins." तो उसमें लिखा है जो व्यक्ति मर जाता है, जिसके पास ज्यादा खिलौना होता है, तो वो ही जीतता है। That's how they measure success in life. तो ऐसे ही कामयाबी को माप करते हैं। Who's got the most cars? जिनके पास ज्यादा गाड़ियाँ Who's होती got the हैं, biggest bank balance? जिनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस Who's है, got the most houses? जिनके पास ज्यादा घर है, That's who wins the game. यही है जो जीतते हैं, जीवन का जो गेम है। But as we said earlier, death comes. तो जैसे हमने कहा मृत्यु आती है And you have to leave all the houses, और all the सारी cars, गाड़ियाँ, all the money, सारे पैसे को everything छोड़ना behind. पड़ता है, सब
सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। So the one who, that bumper sticker, तो स्टिकर में the one who dies with the most toys wins. कि जो मृत्यु के समय जिनके पास सबसे ज्यादा खिलौना होता है वही जीतता है। That's not true. ये असत्य है The one who has the most toys still dies. कि जिनके पास सबसे ज्यादा खिलौना है फिर भी वो मरेगा Has to leave all the toys behind. और सारे खिलौने को छोड़कर जाएगा। So we should not, people, I'm too busy for spiritual life. कुछ लोग कहते हैं मैं ज्यादा व्यस्त हूँ आध्यात्मिक जीवन के लिए। I don't have time to chant a little japa mala or read Gita. I don't have time. I मेरे don't पास have time. समय नहीं होता है जप करने के लिए या भगवद गीता पढ़ने के लिए। I don't have time to go to the temple. I don't have time. मंदिर जाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। Well, what do you have time for? किस लिए समय है? Because at every step, inevitably, death is coming. तो हर कदम में मृत्यु आ रही है We've made no preparation और हमने योजना नहीं किया for that which is inevitable. जो हम टाल नहीं सकते, जिसको हम टाल नहीं सकते। We go to school, हम स्कूल जाते हैं, we have children. हम बच्चा पैदा करते As हैं। soon as the child is born, if you're a good parent and you have the means, तो जब बच्चा पैदा होता है और जो अच्छा माँ बाप होता है और जिनके पास थोड़ा पैसा होता है you put money aside for college. तो कुछ पैसा हम रखते हैं उनके एजुकेशन के लिए। We try to buy a house rather than rent if we can. तो हम प्रयास करते हैं कि घर खरीदे ना We कि उसको got, रेंट। we get health insurance. We get Health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम You get life insurance. लाइफ इंश्योरेंस You get auto insurance. और Auto, car insurance. कार इंश्योरेंस। We brush our teeth so we can keep snacking. ना दांत को ब्रश करते हैं ताकि हम खा सकें। Everybody's planning for the future. तो सब योजना कर रहे हैं भविष्य के लिए। But the one thing that's guaranteed, I'll worry about it later. जो एक चीज पक्का है जो होगा तो उसके लिए हम योजना नहीं करते हैं, सोचते बाद में सोचेंगे। They have saying nothing is certain but death and taxes. तो ना एक कहावत है कि और कुछ पक्का नहीं है केवल मृत्यु और टैक्स। It's a certainty. ये पक्का होगा। We prepare for everything else, सबके लिए योजना करते हैं but not at the time of death. पर मृत्यु के लिए नहीं। Help me with the logic of तो that. आप सोचिए ये कैसे बुद्धिमानी की बात है। So we can learn from a bee not to waste our time just busy, 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 busy. तो हम मधुमक्खी से ये सीख सकते हैं कि केवल व्यस्त नहीं रहना हमको। And time will come and take all the fruits and we'll have nothing left. समय आएगा और सारे फल ले लेगा और कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। So we'll do. I hear another phone. कौन बच रहा है? I tell you know, I have to travel by a plane. तो महाराज कह रहे कि हाँ भाई। If I had 500 rupees for every time a phone went up, I could pay my तो अगर airfares. हर बार उनको 500 रुपया मिलता है तो वो अपने टिकट को वो ना पे कर सकते हैं। Anyway, we're almost done. We'll let you slide. तो लगभग खत्म होगा अभी विराम देंगे। Okay, well, just because of the time factor, let's do this. Let's see if there's any questions, and then if not, I'll tell you a joke. कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं तो चुटकुला। Now, I tell you how this works. तो महाराज बताएं कि कैसा ये काम करते हैं। People are shy, लोग शर्म करते हैं, शर्मिंदे होते हैं, शर्म करते हैं। and it's a good quality. तो अच्छा गुण है। Everyone's thinking, nah, my question is not so important. तो हर कोई सोच है कि मेरा जो प्रश्न है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। And everyone is thinking the person next to me, well, they'll certainly ask a question, so I don't need to. हर कोई सोच है कि जो मेरे बगल में है वो प्रश्न पूछेगा तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। But what happens when everyone thinks the person next to them will ask a तो question? क्या होता है जब हर कोई सोचता है कि जो मेरे बगल में है वो प्रश्न पूछेगा? What happens, क्या folks? होता है? Nobody raises their hand. कोई हाथ नहीं उठाएगा। So we need, but everybody's got questions. और हर किसी के पास प्रश्न होते हैं। So we need one brave soul तो एक हिम्मत वाला चाहिए। to break the ice, as they say in America, to get the ball rolling. तो जो Then everyone, all right, then I can ask a तब question. हर कोई सोचेगा कि मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। So do we have one brave soul with a question? कौन है हिम्मत वाला जो प्रश्न पूछे? Yes, Mataji. I have a question in the morning session. How to be humble in even in the adverse situation. Sometimes we get agitated by some unforgivable situation. You want to ask in Hindi? प्रश्न ये है माता जी पूछे कि कैसे विनम्र रहें जब विपरीत स्थिति होती है। She's asking, how do we become humble? वो पूछ है कि विनम्र कैसे होना है? The thing is, the material nature will do its job.
कि बात ये है कि जो भौतिक प्रकृति है वो अपने काम करेगी। This world is a very humbling place. तो ये जो संसार है बहुत ही हम्बलिंग के हमको विनम्र करने के विवश करते हैं। What do we actually have to be so proud about? तो हमारे पास ऐसा क्या चीज है जिसके वजह से हम इतने अहंकार करते हैं, अहंकारी होते हैं? Let me tell you something. एक बात बताइए महाराज। I used to be a young man. महाराज एक समय था जब युवक थे वो। I used to be able to swim 3 miles a day in the ocean. तो समुद्र में 3 माइल तैरते थे महाराज जी एक समय में। I am lucky now if I can make it up a flight of stairs. तो महाराज कह वो सौभाग्यशाली हो गए अगर तीन स्टेयर्स जो पट है वो चल सकते हैं। What do we have to be so proud about? तो हमारे पास ऐसा क्या चीज है जिनके वजह से गर्वित है हम? Prabhupada tells a story. प्रॉपर्ट एक कहानी बताते हैं। There was a man who had a very nice head of hair, तो एक व्यक्ति था जिनके बहुत अच्छे बाल थे। and he was very proud of it. हमको बहुत अहंकार था अपने बाल पे। And if you don't think this is true, अगर आप सोचते हैं कि ये सत्य नहीं है, next time you go past a men's barber shop, तो जब आप किसी पुरुष के जो नाई के पास गुजरते हो, they have all those pictures इतने सारे ना फोटोज है वहाँ। of different ways you can cut your hair. कई प्रकार से आप अपने बाल को बना। You can go this way, you can go that way, you can go backward, you can put a zip down the middle, so many things. नहीं कर सकता है तो इतने प्रकार से आप कर सकते हैं। So this man was very proud of his hair, तो उस व्यक्ति को अपने बाल पे बहुत गर्व था। and he had 2 wives. उनके 2 पत्नियां थी। One wife was young, एक जो पत्नी थी, the other wife was old. और दूसरे जो पति थे वृद्ध थे। So he'd come home from work. तो वो काम से That's वापस another आते- phone. इसका फोन बज रहा है। You guys are incorrigible. आप सीखते हैं। Mom, it was your phone? Acha. All right. I don't want to say we're not going to charge anybody because everyone, oh, I'll turn their phone back on, but we're almost done. Okay, so the man has a very nice head of hair. तो वो व्यक्ति का बहुत अच्छा बाल था। 2 wives, old wife, young wife. 2 पत्नियां, एक वृद्ध एक युवती। And when he comes home at night, तो जब घर आते रात को, sometimes he puts his head on the lap of his young wife. तो युवती पत्नी के गोद पे वो अपना सर रखते हैं। And she doesn't like him looking old. तो वो Like she doesn't like him looking old. तो उनको She's पसंद- young, she wants him to look young. तो वो युवती है उनको वो जो युवती पत्नी है उनको अच्छा नहीं लगता है जब पति जो है वृद्ध लगता है वो। So when he's resting, he's not looking. Ding, ding, ding. She pulls out all the gray hairs. तो जब वो ना कि रेस्ट आराम कर रहे हैं पति जो है उनके गोद में, तो वो पति का जो सफेद बाल है उसको हटा देते हैं, निकाल देते हैं। Now sometimes when he comes home, जब वो घर आते हैं he puts his lap on the old wife and he's resting his head on her lap. तो वृद्ध पत्नी के गोद पे वो सर रख के आराम करते हैं। And she doesn't want him to look young. तो वो नहीं चाहते हैं कि वो पति जो है जवान लगे हो। He may run off with the young wife. He may just become too attached to the young wife. कहीं वो ना युवती पत्नी के साथ ज़्यादा आसक्त ना हो जाए। So bing, 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 she pulls out all the old hairs, all the dark hairs. जब काले बाल हैं, उसको हटा देते हैं वो। And before you know it, the poor man is bald. और क्या होता है अंत में वो जो बेचारा है वो पतला हो जाता है। So this material nature, so many things are coming. You know, don't worry, we'll be if we open our eyes, we'll be humble. तो ये भौतिक सृष्टि में इतने सारी चीज आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि विनम्र हो जाएंगे आप। And what's mine? और क्या है मेरा? Suppose I walk into Bank of America. आप मान लीजिए कि बैंक ऑफ अमेरिका में हम चलते हैं अंदर। I say, Bank of America is mine. तो मैं कहता हूँ कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरा है। They'll say, you fool, it's not yours. तो लोग कहेंगे बेवकूफ हो क्या, आपका नहीं है ये। All right, I renounce Bank of तो America. फिर क्या कहेंगे? मैं त्याग देता हूँ बैंक ऑफ Is it what I didn't own it? It's not mine to तो renounce. वो कब था मेरा कि मैं त्याग कर रहा हूँ उसको? I tell you frankly, now it's America. तो सच कह रहे हैं महाराज कि अभी अमेरिका है। Before it was America, it belonged to the Red Indians. तो उससे पहले अमेरिका जो है रेड इंडियन। Before the Red Indians, it belonged to somebody और else. रेड इंडियन से पहले किसी और का था अमेरिका। I mean, this was Bharatvarsa. सब पूरे ना विश्व जो था भारतवर्ष था।
Then it became Pakistan, India. फिर पाकिस्तान इंडिया बना Pakistan was east and west. Now it's Bangladesh and और Pakistan. पाकिस्तान भी विभाजित हुआ बांग्लादेश You know, और I mean, everything is. What does it mean? It's just a line in the sand. It doesn't really. Everything belongs to Krishna. इसका अर्थ क्या है ना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। So if we're actually intelligent तो अगर हम सच में and look बुद्धिमान at हैं things, और हम चीजों को देख सकते हैं, Prabhupada said, "I am going on by the mercy of Krishna alone." तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं चल रहा हूँ केवल कृष्ण की कृपा से। We don't even know how we digest our food. हम जानते भी नहीं कि हमारे जो खाना है वो कैसे उसका And पचाव we're going to be proud. और हम कितना Of अहंकार कर रहे हैं। इसके बारे में Everything we do is by the mercy of Krishna alone. जो भी कर रहे हैं कृष्ण की कृपा से ही कर रहे हैं। Okay, so just if we open our eyes and think, then अगर we're आँख humble. खोलेंगे और सोचेंगे तो हम विनम्र बन जाएंगे। Okay, we're getting close to the end. Anyone else have a question? एक और प्रश्न। Yes, sir. Yes, here. This man here. And then we'll take you and then we'll be done. Yeah. महाराज जी प्रभुपाद जी से फर्स्ट बार मिले, क्या What was your experience of meeting Prabhupada for the first time? प्रश्न ये I'll tell you something. प्रश्न ये Yeah, yeah. हाँ, प्रभु जी ने पूछा है कि महाराज का जो क्या अनुभव था जब उन्होंने पहली बार प्रभुपाद से मिले। Now you have to realize we didn't know anything about anything. तो आपको ये जानना है कि उस समय ना उन लोगों को कुछ पता नहीं था, कुछ भी के बारे में कुछ पता नहीं। I did know this. पर ये पता था I was born into a very, very comfortable life. जो बहुत ही आरामदायक जीवन था महाराज का। And if I'd stayed on the boat, if I'd stayed on the conveyor belt, if I'd stayed in that track, और उसी रास्ते में रहते तो I mean, anything could happen. We could be struck by lightning. कुछ भी हो सकता है कि ना। But if I'd stayed in that boat, I would have gone to a good school. तो अगर उसी राह में रहते तो बहुत अच्छे स्कूल में जा सकते थे महाराज। I would have gotten, a good job. बहुत अच्छा जॉब मिल जाता महाराज को। I would have made a bunch of money. बहुत पैसा कमाते। Om Jaya Jagadish Hari. जय जगदीश हरे। Give me a new car and a house by the sea. एक नई गाड़ी और एक आलीशान बंगला दे दीजिए। I would have gotten what everybody's looking for. तो जो भी मांगता तो वो मिलता मुझे महाराज कह रहे। But I looked around और महाराज ने चारों तरफ देखा and I saw that they weren't happy. और उन्होंने देखा लोग प्रसन्न नहीं थे, I saw they weren't happy. वो खुश नहीं थे लोग। And I saw what were they doing to make the world a better place? Really, what lasting good? महाराज देख रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे थे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए क्या कर रहे थे वो। So I was feeling deep frustration तो महाराज बहुत निराश हो रहे थे that if I get in the same boat with everybody else, I'm going to wind up in the same place. तो अगर उन लोग जैसे करते तो ऐसे ही बनते वो And nobody's happy there. और कोई प्रसन्न नहीं है। So what to do? तो क्या करें? Hey, this is too much. Come on. So that was in the back of my mind. ये महाराज के दिमाग में था। So it's a long story. Somehow or other I got Prabhupada's books I was reading. तो किसी न किसी तरीके से महाराज को प्रभुपाद जी के पुस्तक मिले और And उनको पढ़ा। Prabhupada was coming to Los Angeles. और प्रभुपाद लॉस एंजलिस आ रहे थे। And the devotees told me, Prabhupada is like a swan. तो भक्त लोगों ने कहा महाराज से जो प्रभुपाद है वो हंस की तरह है। Now remember, we didn't know anything. तो आप याद कीजिए कि हम उन लोगों को कुछ पता नहीं था। And I was thinking, swan? तो महाराज सोच रहे कि Does he have a long neck? तो फिर You know, swans have that long neck. जैसे हंस होता I was है thinking, what do they mean, गर्दन होता है। swan? And then I thought, oh, must mean graceful. तो फिर सोचा कि शायद ग्रेसफुल होगा, Must mean serene. कि बहुत सीरीन होगा। And what it really means is that a swan उसका सही अर्थ ये है कि हंस जो है has an enzyme in its mouth. उनके मुंह में एंजाइम होते हैं। You can give the swan, certain type of swans, कुछ ऐसे हंस होते हैं and you can mix water and milk, तो दूध और पानी का मिश्रण उनको दे सकते हैं। and the swan has an enzyme in their mouth that curdles it, तो उनके मुंह में एक एंजाइम होता है जो उस दूध को पनीर की तरह बनाता है। and they can spit out the waste, spit out the liquid, and they can swallow the paneer or the curd. और उस पनीर को खा सकता है, पानी को छोड़ सकते हैं। So
What it really means is a saintly person takes the essence of life. तो इसका अर्थ ये है कि जो साधु होता है वो जीवन का सार को लेता है वो। Now, a saintly person is not seen with the eyes. तो जो साधु होता है, जो साधु पुरुष होता है, वो उन आंखों से उनका दर्शन नहीं कर सकते हम। That appears contradictory. तो ये ऐसा लगता है कि I don't see with my eyes. How do I see? तो आंखों से नहीं देखते तो ये अजीब सा लग रहा है। Does a sadhu have a long beard? क्या उनके बड़ी सी दाढ़ी है क्या? Is he dressed in saffron cloths? गेरुआ कपड़े पहने हैं वो? Does he say Astravad and give you some ash? तो क्या वो कुछ आशीर्वाद कह के विभूति देते हैं आपको? I don't want to go down that path. So, no, a sadhu is seen with the तो ears. साधु का दर्शन करते हैं श्रवण के माध्यम से। I've been reading Prabhupada's books, तो प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते थे। and when I saw him in person, और जब प्रभुपाद को साक्षात देखा, he was the embodiment of everything he taught. तो जो भी प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उसका साक्षात न मूर्तिमान थे वो प्रभुपाद। But now you're thinking, oh, I didn't get to see Prabhupada. तो हम यही सोच रहे हैं, अरे हमने तो प्रभुपाद को देखे नहीं। Swamiji is so fortunate. स्वामी जी बहुत सौभाग्यशाली है, You are also fortunate. और आप भी सौभाग्यशाली हो। Prabhupada said you could be standing right next to me. Prabhupada said you could be standing right next to him, right next to तो him, प्रभुपाद कहते हैं आप मेरे बगल में खड़े हो सकते हो and being completely in illusion. और बिल्कुल माया में ना भ्रम में हो सकते हो आप, Or you could be thousands of miles away, या बहुत दूर हो सकते हो मेरे से, years away in the passage of time, तो कई सालों दूर ना समय के ना, and be right next to Prabhupada. तो प्रभुपाद के बगल में हो सकते हैं। How is that possible? तो ये मुमकिन कैसे है? This is the last question, then we'll end. How is it possible, even though you're separated by time, कि ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि काल की वजह से हम दूर हैं प्रभुपाद जी से, to be right next to और Prabhupada, फिर भी हम प्रभुपाद के बगल में खड़े हैं, to be under his full shelter, क्योंकि आश्रय पे हैं, to get his mercy and shakti? क्योंकि कृपा और शक्ति मिलते हैं हमको। How is it possible? ये कैसे संभव है? This man right here, Yes. you read his books. जब हम उनके पुस्तक को पढ़ते हैं, I'll tell you one last story. I promise we'll get to it. आखिरी कहानी बताएंगे महाराज। Prabhupada was staying at our temple in Brooklyn, तो ब्रुकलिन मंदिर में प्रभुपाद जी रह रहे थे, and there was a little garden in the back. The building was here, and then there was a little garden in back. तो मंदिर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था, And Prabhupada's window to Prabhupada's darshan room तो प्रभुपाद जी के जो कक्ष है जहाँ वो दर्शन देते थे वहाँ एक खिड़की थी, opened out into that little garden. तो वो जब खोलते थे तो वो गार्डन को देख सकते थे, And it was summertime, और गर्मी का मौसम था, no mosquitoes. कोई मच्छर नहीं था, So the windows were open. तो जो खिड़की था वो खुली हुई Okay, थी। now that's the setup. Now, so that Prabhupada could be peacefully doing his work, they set up a guard system. Different devotees volunteered to stay in that garden and keep everybody out, keep it quiet. तो ताकि प्रभुपाद शांति से अपने कार्य कर सके, कि वो लिखते थे तात्पर्य, तो क्या किया गया कि एक भक्त रखा गया जो ना देखते कि कोई डिस्टर्ब ना करे प्रभुपाद। And they asked volunteers who would stay there as a volunteer, rotating schedule for the next few days to keep the garden quiet. तो वॉलंटियर्स से ना, So I volunteered. तो महाराज जी वॉलंटियर बने वो सेवा करने के लिए। I had the shift from 1 o'clock till 3 o'clock in the morning, 1 to 3 a.m. तो 1 a.m. to 3 a.m. का सेवा था महाराज को रात में 1 बजे से 3 बजे तक। So I'm in the garden, little garden, and I'm chanting japa. तो गार्डन में थे महाराज वहाँ, और वहाँ जप कर रहे थे, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, like that. And all of a sudden, I saw Prabhupada coming. तो अचानक से उन्होंने देखा कि प्रभुपाद आए। At 1:45 a.m., 1:45 पे प्रभुपाद जी आए and he turned on his desk lamp और अपने डेस्क लैम्प को ऑन किया and he sat down. और बैठे। You know, when it's dark outside and its light is on inside, you can see in very easily. तो जब अंधेरा होता है बाहर और अंदर रोशनी होती है तो ज़्यादा क्लियरली हम स्पष्ट से देख सकते हैं अंदर। And physically, I was from Prabhupada to this Mataji. I was not more than, what, 2 meters, 3 meters तो at the 2 most. मीटर 3 मीटर की दूरी में थे महाराज और प्रभुपाद जी। But it was dark outside, light inside. बाहर अंधेरा था और अंदर रोशनी थी। And I saw Prabhupada sit down, तो प्रभुपाद जी बैठे, put on his glasses, अपने चश्मा पहने, and he looked at because every morning at that time, they put
Prabhupada had Sanskrit secretary who would translate the Devanagari. You know, he'd take it from the Sanskrit to the English word for word. तो प्रपात के पास ना कुछ संस्कृत के जो ना सेक्रेटरीज होते हैं जो संस्कृत को इंग्लिश में वो अनुवाद करते थे Because that's clerical work. तो ये छोटे से काम है So Prabhupada would look at it and make sure the Sanskrit, he'd make sure the Sanskrit and the word for word was accurate. तो प्रपात फिर वेरीफाई करते थे चेक करते थे कि जो संस्कृत है और जो ना शब्दार्थ है दोनों सही है And then he'd click on his dictaphone फिर डिक्टाफोन को ऑन करते थे and he would give his Bhaktivedanta और purports. तात्पर्य बोलते थे रिकॉर्ड करते थे So I watched Prabhupada, he checked the Sanskrit, then he looked at the verse, the translation, and then he clicked on the dictaphone and began to तो speak. ऐसे महाराज देख रहे थे कि प्रपात ये सब कार्य कर रहे थे And he said a few sentences. तो कुछ सेंटेंस बोले प्रपात जी Then ने he leaned back and he thought. और फिर सोचने लगे प्रपात जी Then he pulled down from behind it his Bhagavatam with 7 different commentaries. तो अपने भागवत प्रपात जी के पास ऐसे भागवत था जिसमें 7 प्रकार के टिप्पणियां थी उसमें Sridhar Swami, Madhvacharya, ऐसे ऐसे महान आचार्यों Vishnu Chakravarti Thakur, different commentaries. कई महान आचार्यों के टिप्पणियां थी उसमें And he'd look at their commentaries. तो उनके टिप्पणियों को देखते थे Then he'd turn the dictaphone on and say a little bit more. फिर डिक्टाफोन जो रिकॉर्डर होते हैं उसको ऑन करके फिर वो बताते थे अपने तात्पर्य And I was watching this. और महाराज जी देख रहे थे ये सब And I was thinking that all the commentaries of the great acharyas, Ramanuja, Madhvacharya, Nivarkacharya, Vishnu Swami, Sankaracharya, they're all coming down in the pages of Prabhupada's books. तो महाराज ये विचार कर रहे थे ये इतने सारे महान जो साधुआ है संत है रामानुजाचार्य मध्वाचार्य शंकराचार्य ये सब के जो टिप्पणियां हैं वो एकत्रित होकर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आ रही है So I was chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare तो Hare. महाराज जी उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे Then I saw Prabhupada read back. He'd pull down this Upanishad, he'd pull down that Upanishad, he'd pull down Bhakti Rasamrita by Srila Rupa Goswami. He was pulling off his bookshelf and looking up the verse and thinking and putting on his stuff. तो ऐसे ही महाराज देख रहे थे कि प्रभुपाद जी कई ग्रंथों को निकाल रहे थे भक्ति रसायन सिंधु रूप गोस्वामी के द्वारा और कई उपनिषद ना ये सब देखकर पढ़ के सोच के फिर प्रभुपाद जी लिखते थे So I was Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram. और उस स्वर पे से महाराज जी जप करने लगे And then I was thinking like all the rivers come out of the Himalayas as streams. And then they all flow into Mother Ganga, the Yamuna, and then they all flow into the ocean. तो ऐसे ही इस प्रकार महाराज विचार करते कि सारी नदियां जो है हिमालय से उत्पन्न होके गंगा और यमुना में मिश्रित होके फिर समुद्र में जाते हैं ऐसे प्रभुपाद जी ये सब तात्पर्य को लेकर एक तात्पर्य बना देते हैं And then I was thinking तो फिर that all the wisdom of the Vedas are coming through Srila Prabhupada's consciousness. तो फिर महाराज विचार करते कि सारे वैदिक जो शास्त्र का जो ज्ञान है कि प्रभुपाद की चेतना में आके And coming down on the pages और उन पेजेस में आ of रहे थे Prabhupada's जो purports, प्रभुपाद लिख रहे थे तात्पर्य में perfectly crafted for modern man, modern people, just right for the time, place, circumstance. It's all coming down on the pages. आधुनिक लोगों के लिए जो सही है वही लिख रहे थे प्रभुपाद जी ना देश काल पात्र के अनुसार Then I was Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. और जोर से महाराज जी जप करने लगे And then I thought, and all I have to do is open up these books, and I get all of तो that. फिर विचार किए महाराज जी कि मुझे केवल पुस्तक को खोले पढ़ने और सब उसका फायदा उठा पाऊंगा मैं उसका So at that point, in my little tiny brain, I was in ecstasy. तो उस समय महाराज बहुत आनंद में आ गए थे I was Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. तो और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे Now remember what my mission was: तो आप याद कीजिए कि महाराज का क्या सेवा था उस समय to keep the garden quiet. कि ना जो उस जगह को शांत रखना शांति बनाए रखना था उनको Prabhupada took the glass of water on his desk प्रभुपाद ने जो गिलास पानी का गिलास है डेस्क पे and he threw it out the window all over me. और ना खिड़की से उन्होंने फेंक दिया और महाराज जी गीले हो गए पानी से I was thinking Abhishekam. तो महाराज बड़ा अभिषेक हो गया Prabhupada was, hey, I'm working here. Come on, keep it quiet, तो keep it प्रभुपाद ने quiet, you सोचा know. मैं काम
माफ करो, चुप रहो ना। So we'll end here, but all you have to do is open Prabhupada's books. तो यहीं पे विराम लेंगे, पर जो आपको केवल यही करना है, प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है उसको खोलना है और पढ़ना है आपको। You're immediately associating with all the acharyas. और तुरंत ही सारे जो महान आचार्य का संग मिलेगा You're आपको। immediately associating with all the Mahajans. जो महाजन है उनका सानिध्य मिलेगा आपको। Narada, Sita, Devala, Vyasa, you're associating with all of them. नारद, वेद व्यास, असित, ये सब उनका संग मिलेगा And it is आपको। not limited by time, it's not limited by space, it's not limited by gender, it's not limited by anything. तो समय या काल या जन्म से सीमित नहीं है ये। So we're going to end. यहीं पे विराम लेंगे हम। What is the one thought just stated I want you to go home with? तो यहाँ महाराज पूछ रहे कौन सा विचार आप लेकर जाओगे घर पे। I've given you a homework assignment. एक होमवर्क दिए महाराज ने आप लोगों को करने के लिए। What is that assignment? वो क्या है होमवर्क, बताना चाहते हैं? Read Srila Prabhupada's books. शिला प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़िए आप। You will be completely happy, and all the problems of life you'll learn how to cross over. आप पूर्णतया प्रसन्न हो जाएंगे और कोई भी समस्या है जीवन का आप पार कर पाओगे उसको। So thank you very much. Hare Krishna. So what happens? And do not make a wrong class. They were sitting there one prasadam. Am I right? महाराज जी को धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य बद्रीनारायण स्वामी महाराज जी की, प्रभुपाद महाराज की जय। बहुत धन्यवाद अशोक का, तभी सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद पाठ कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So where do you serve prasad? Right here. I'm going to see what you serve out. No, I want to see what the feast is. It's a nice crowd. Good crowd. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Maharaj. Why? Ask her why. Why? जैसे हम कभी Why? दर्शन कर सकते हैं इनके, ये सब इसमें Why?